अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सो इसे समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। So students, as you know, in our previous lecture, we did discussion about what is covalent bond and we did some examples related to covalent bond. But in this lecture, we are going to discuss in detail types of covalent bond. As we know that all the time, there is not only one bond pair involved in a covalent bond. There could be more than one bond pairs as well. So depending upon the number of bond pairs, we can give the names to the different types of the covalent bond. Yes, so there are three different types of covalent bond: single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. So one by one हम तीनों को डिस्कस करते हैं with the help of few examples. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं single covalent bond से. As you know that in our previous lecture we discussed 4 examples and all 4 of them they were related to covalent bond which was single covalent bond, because in all those examples there was only one bond pair involved. So let's have a look at few examples of single covalent bond. For example, if you talk about formation of Cl2, which is a chlorine molecule. So when chlorine combines with another atom, chlorine, same, so they are going to form single covalent bond. Let's have a look how. We know that chlorine is having total 17 electrons and 7 electrons in the outermost shell. So if I'll draw a Lewis structure diagram for chlorine, it would be something like this: 6 and 7. And if I'll draw another chlorine, it is going to be, of course, I need to represent it with the help of crosses. And there are 7 of them. As you can see that this chlorine is having 7 electrons in the outermost shell, and this chlorine is also having 7 electrons in its outermost shell. So what will happen? These two chlorine atoms, they are going to come closer and they are going to share this 1 electron. And now you can see that both chlorine atoms, they are having 8 electrons in their outermost shell. If you will look at this chlorine atom, so having 8 electrons, and if you will look at this chlorine atom, it is also having 8 electrons. So its electronic configuration is similar to the nearby noble gas present. So if we will show it, we can show it like this: Cl, single bond, Cl, and we can call it as Cl2, chlorine molecule. Now, as only one bond pair is involved, this is one bond pair. So if only one bond pair is involved, you are going to call it as single covalent bond. एक और एग्जाम्पल को देखते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की, जस्ट टू मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर, बिकॉज वी हैव टू डू इट फॉर द डबल एंड ट्रिपल एज वेल, सो यू नॉट गेट कंफ्यूज्ड एट ऑल. For example, in methane, we did discussion about methane in our previous class as well. We know that in methane, we have carbon, and carbon is having 4 electrons in the outermost shell, and each one of them is going to combine with hydrogen, like this. I hope you do understand how to make these Lewis structure diagrams. So when these 5 atoms are going to combine together, they are going to form this methane structure like this, and we can call it as CH4 as well. So as you can clearly see that only one bond pair over here, one bond pair over here, one bond pair over here, and one bond pair over here is used. One bond pair. But you will say that no, there are 4 bond pairs. 4 bond pairs are in total. But between two atoms, there is only one bond pair, because one electron is being shared by each atom over here. Now let's have a look at double covalent bond. आखिर फिर अगर ये सिंगल है
तो डबल कोवलेंट बॉन्ड किस तरह के एटम्स में एग्जिस्ट करेगा। सो उसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल की, जो कि है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है जब दो सेम तरह के ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन होते हैं। Because oxygen is not stable alone, because its outermost shell is having 6 electrons and for stability it must contain 8 electrons. So oxygen अपने जैसे ही एक एटम के साथ मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएगा और उस मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। So let's have a look at structure of oxygen. Because oxygen is having total number of 8 electrons and in the outermost shell there are 6 electrons. Now you can see that space of 2 electrons is vacant. And if we look at another oxygen atom, it is also having 6 electrons. So space of 2 electrons is vacant. So इस केस में क्या होने वाला है, आखिर ये दोनों एटम्स किस तरह से अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नियरेस्ट टू नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल करेंगे। सो होगा क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर करने से एक दूसरे की नीड सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बोथ ऑफ देम दे आर गोइंग टू शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन एटम कंट्रीब्यूट करेगा और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरा ऑक्सीजन एटम कंट्रीब्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आएंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस ऑक्सीजन over here and 2 electrons from this oxygen over here. Now, if you look at this diagram, now there is a difference. For this oxygen atom, you can find 8 electrons, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And for this oxygen, you can also find 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Of course, these electrons are not transferred properly. This is a covalent bond. So these electrons would be jumping from one atom to another atom, one atom to another atom. But that jumping is so fast that they are covalently bound. So we can say that there is a chemical bond. But look at over here. There is a difference. Look at this diagram and look at this diagram. Can you see there are 2 pairs? 1 and 2. So this is the first bond pair and this one is second bond pair. So how many bond pairs are involved over here? So there are in total 2 bond pairs involved. And if 2 bond pairs are involved in bonding, we are going to call it as double covalent bond. अब ये तो हुई एक सिंपल सी एग्जाम्पल विद ऑक्सीजन। अब एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी देखते हैं ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो जाए। सो सेकेंड एग्जाम्पल इज, लेट्स डिस्कस फॉर ईथीन। Ethene is a hydrocarbon, means it is made up of carbon and hydrogen, and its formula is C2H4. As you can see that 2 atoms of carbon and 4 atoms of hydrogen, they are combined together. But let's identify that where is the covalent bond and specifically double covalent bond. So ethene का structure कुछ इस तरह से होगा कि 1 carbon और उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड होंगे विद हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से। लेकिन जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद एन अदर कार्बन लाइक दिस। अब अगर आप देखें इस डायग्राम की तरफ, सो यू कैन सी दैट देयर इज 1 बॉन्ड पेयर एंड एन अदर बॉन्ड पेयर। और अगर आप देखें इस कार्बन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, तो आपको नजर आएंगे कि इट इज सराउंडेड विद 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अगर आप इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने बैठेंगे, सो यू कैन इजीली काउंट इट। कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब कि अब ये कार्बन स्टेबल फॉर्म में है। और अगर आप नजर डालेंगे हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी पे, तो ईच हाइड्रोजन इज ऑल्सो हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका मतलब कि दिस स्ट्रक्चर इज कंप्लीट नाउ एंड यू कैन सी 2 bond pairs are involved in this structure. So we can see that, say that it is a
डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं सो इट वुड बी C डबल बॉन्ड C, H and H, H, H. So in total C2H4. Now remember, this one is single bond and this one is double bond. So मुझे उम्मीद है कि आपको सिंगल और डबल बॉन्ड का डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं हमारे ट्रिपल बॉन्ड की तरफ एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन. Nitrogen is a gas and it exists in molecular form which is N2. So देखते हैं कि आखिर N2 कैसे बनता है. So nitrogen is having 5 electrons in its outermost shell like this. And if we talk about another nitrogen, so it would be having 5 electrons in its outermost shell. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So you know that if there are 5 electrons, so how many more electrons nitrogen is in need with? So nitrogen को ज़रूरत है 3 मज़ीद electrons की और 3 मज़ीद electrons तो नहीं मिलेंगे. So what is going to happen? These 2 nitrogen atoms, they are going to share their 3 electrons together. 3 electrons. So you can see that there would be 3 bond pairs. Look over here. This nitrogen having 3 electrons and 5, right? And here I'm going to draw the electrons for the other nitrogen. Now you can see that this nitrogen is having 8 electrons in total and this nitrogen is also having 8 electrons in total. So हुई ना stability दोनों atoms of nitrogen की. लेकिन look at this clearly. You can see that 1, 2 and 3. How many bond pairs are involved? So there are 3 bond pairs involved. So हम इसे कह सकते हैं कि this is N, 3 bond pairs N, which is also written as N2 because 2 atoms of nitrogen over here are combined together. So चूंकि 3 bond pairs involved हैं, so हम इसे बोलेंगे triple covalent bond. अब आप कहेंगे ये तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की थोड़ी इजी एग्जांपल है. तो अब लिखते हैं एक थोड़ी सी टफ एग्जांपल की तरफ विच इज द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन. आपको हर टाइप की एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स तो मस्ट लर्न कर लेनी चाहिए बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अ लॉन्ग क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो उसके लिए आपको मिनिमम 2 एग्जाम्पल फॉर ईच टाइप जरूर याद करनी है. अगर हम देखें इथाइन के फॉर्मूले की तरफ सो दिस इज C2H2 मतलब 2 एटम कार्बन के और 2 ही एटम हाइड्रोजन के. अगर देखें इसकी फॉर्मेशन की तरफ सो कार्बन इज हैविंग टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड लाइक दिस. इफ वी ड्रॉ अ Lewis structure diagram, hydrogen is attached on one end and this carbon is attached with another carbon. So, as you can see that there are 3 bond pairs involved, so we can write its structure like this. So, this bond is called as triple covalent bond. Now, from this whole board, you can clearly see the difference. If between 2 atoms, there is 1 bond pair involved, you are going to call it as single covalent bond. Over here you can see single covalent bond. Over here you can see here the single covalent bond between carbon and hydrogen. But if between 2 atoms 2 bond pairs are involved, then you are going to call it as double covalent bond. But make sure करना है कि जो 2 bond pairs हैं वो 2 atoms के बीच में ही होंगे. Students इसको sometimes misconfuse कर सकते हैं by looking at this structure. That in this structure you can see 1, 2, 3, 4 lines. So 4 लाइनों का मतलब 4 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, मतलब इसमें 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. लेकिन अगर बात करें डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की तो इसमें डबल या ट्रिपल कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. बट ओवर हेयर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, लेकिन एक डबल बॉन्ड है और
1, 2, 3 एंड 4, 4 सिंगल बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं। लास्टली डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल ऑफ इथाइन में भी, दैट देयर आर 2 सिंगल बॉन्ड्स, 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स एंड ओनली 1 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। मगर हाउ मेनी टोटल बॉन्ड्स आर देयर? 3 + 1 + 1, टोटल 5 bonds. मतलब how many bond pairs are involved? There are total 5 bond pairs involved. अब ये तो हुई बात कोवलेंट बॉन्ड की और टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की, जिसमें हमने देखा कि बॉन्ड पेयर्स आर इन्वॉल्व्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं उसकी वजह से बॉन्ड वजूद में आता है, यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर हो रहे हैं, एक एटम से और एक दूसरे एटम से। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, समटाइम्स बॉन्ड पेयर के अलावा भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्ट ले सकते हैं। सो इस चीज को समझने के लिए आपको सुनना पड़ेगा अगला लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस की हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, और हमने सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का डिफरेंस समझा है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आपको ये करना है कि आपको तीनों की डेफिनेशंस और एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स फॉर ईच लर्न करनी है। हम अपने अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।